मातृभूमि न्यूज, मातृभूमि की आवाज, मातृभूमि के लिए। भारत विकास परिषद केशोद शाखा ने 6 वर्ष पूर्ण થતા વાર્ષિક સાધારણ સભા તારીખ 7/4/2025 ને સોમવારના રોજ સાંજે 7:30 કલાકે વૃંદાવન પાર્કમાં યોજાઈ હતી। આ કાર્યક્રમમાં ગત વર્ષના કાર્યક્રમોના લેખાજોખા થતા આવનારા વર્ષ માટેની નવી ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી। નવી ટીમમાં પ્રમુખ શ્રી આરપી સોલંકી, મંત્રી જીતેન્દ્ર પટેલ, ઉપપ્રમુખ નિશાંતભાઈ પુરોહિત, સહમંત્રી વિજયભાઈ એન મહેતા, खजांची जयदीपभाई सोनी, संगठन मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीणभाई गजेरा, महिला संयोजिका श्रीमती कंचनबेन पी गजेरा, सहसंयोजिका श्रीमती शारदाबेन राखोलिया અને મીડિયા સેલ કન્વીનર દિનેશભાઈ કાનાબરની વરણી કરવામાં આવી। આ કાર્યક્રમમાં નવનિયુક્ત હોદ્દેદારોના શપથવિધિ કાર્ય માટે પ્રાંત અને રિજિયન કક્ષાના પ્રતિનિધિઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ભારત વિકાસ પરિષદની પરંપરાગત પ્રણાલી મુજબ વંદે માતરમ ગાન તથા મહેમાનોની ઉપસ્થિતિમાં દીપ પ્રાગટ્ય કરીને કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો। નવા હોદ્દેદારોના શપથવિધિ કાર્યક્રમમાં રિજિયન સંગઠન સચિવ કક્ષાના પ્રફુલભાઈ ગોસ્વામી તથા સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત સંગઠન સચિવ કરશનભાઈ મહેતા, સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત સંપર્ક કન્વીનર હરિભાઈ પરમાર તથા રવિભાઈ રાઠોડ, સહમંત્રી સોમનાથ શાખા તથા ડોક્ટર તન્ના સાહેબ, સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત पर्यावरण सचिव तथा जितेन्द्रभाई ढोड़किया तथा अतिथि विशेष प्रो मेघनाथी साहेब खास उपस्थित रहा था। केशोद शहर में सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भारत विकास परिषद द्वारा योगदान आपवामां आवतुं होय छे अने केशोद शहर में अलग अलग ओळख मेळवीने लोक चाहना मेळवी छे। राष्ट्रीय धार्मिक तहेवारो उजववा माटे जोड़ाईने शहर में राष्ट्रभक्ति देशनुं सर्जन करनारा माटे जब्बर योगदान आपवामां आव्युं छे। केशोद भारत विकास परिषद आयोजित वार्षिक साधारण सभा और नवी कारोबारीनी वरणी कार्यक्रमना प्रारंभे जे.आर. नंदणिया द्वारा उपस्थित मेहमानों सदस्यों शाब्दिक स्वागत करवामां आव्युं। त्यारबाद श्री करशनभाई मेहता द्वारा प्रांत और रीजन कक्षाए थयेल बंधारणीय सुधारानी विगते चर्चा करवामां आवी हती। त्यारबाद संस्थाना वार्षिक आवक जावकना हिसाबोनुं सरवैयु खजांची दीपकभाई सोनी द्वारा रजू करवामां आव्युं हतुं। त्यारबाद करशनभाई मेहता द्वारा नवा होद्देदारोने शपथ ग्रहण करावे। त्यारबाद नवनियुक्त थयेला प्रमुख आरपी सोलंकीए भारत विकास परिषदना आगामी वर्षना आयोजन बाबते वातो करी हती तथा श्री प्रफुलभाई गोस्वामी द्वारा वर्तमान समय में भारत विकासनी शाखानो रिजियन और प्रांतनी माहिती साथे आरएसएस संघना शताब्दी वर्ष उजवणी बाबते सौने मार्गदर्शन आप्युं। केशोद शाखाना संस्थापक प्रमुख श्री तन्ना साहेब द्वारा राष्ट्रीय मूल्य और सेवाधर्म बाबते खूब सारी बात करी हती। अंते जितेन्द्रभाई पटेले उपस्थित सौनो आभार व्यक्त कर्यो। समग्र कार्यक्रमनुं सफल संचालन जाणीता उद्घोषक श्री डॉक्टर भूपेन्द्रभाई जोशीए कर्युं हतुं। अंते कार्यक्रमने राष्ट्रगान साथे विराम आपवामां आव्युं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज केशोदनी अंदर भारत विकास परिषदनी जनरल बोर्डनी मीटिंग बोलाववामां आवी। तेमां अमारा रिजनल ऑफिसर श्री प्रफुलभाई गोस्वामी, श्री करशनभाई मेहता, श्री हरिभाई परमार, स्नेहलभाई तन्ना, रतिभाई राठौड़, रविभाई राठौड़ तथा जितेन्द्रभाई ढोड़किया अमारा अधिकारीगण श्री उपस्थित रह्या अने आजरोज अमे नवी कारोबारीनी निमणूक एमना सूचनथी करवामां आवी, जेमां प्रमुखश्री तरीके मारुं नाम सूचववामां आवता हूँ बिनहरीफ प्रमुख तरीके आजे नियुक्त थयेलो छुं तथा मारी साथे जयदीपभाई जांजमेरिया अने प्रोफेसर पटेल साहेब पण मंत्रीश्री अने खजांची श्री तरीके एमणे शपथ ग्रहण करेल छे। तो आजना कार्यक्रममां केशोदना शाखाना तमाम सभ्यश्री भाईओ तथा बहनों उपस्थित रह्या ए बदल खूब खूब आभार। अस्तु। जय हिंद। मातरम संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण एवं पंचसूत्रों ने वरेली एवं भारत विकास परिषद संस्था केशोदनी आज 6 वर्ष पूर्ण करी और 7मा वर्षनी वार्षिक साधारण सभा योजाई गई। आजना आ कार्यक्रम में भारतभर में 1600 जेटली ब्रांच धरावतो आ संस्थानी अंदर त्यारे आरएसएस एटले के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना 100 वर्ष पूर्ण थई रह्या छे, त्यारे अमारी संस्था द्वारा पण तेमनी साथे रहीने कुल 5 आयामोने गणतरी में राखी अने सेवा कार्योनुं आयोजन करवानुं छे, जेनी अंदर स्वदेशी, कुटुंब प्रबोधन, समरसता, पर्यावरण अने संस्कार आ 5 विषयोने ध्यान में राखी अने अमे सौ कार्यक्रमों आयोजन करवाना छे। भारत विकास परिषद द्वारा देश ने अनुरूप राष्ट्र देवो भव ए विषय ने ध्यान में राखी अनेक सेवा कार्यों करी रही है।
સાથે સાથે ભારત કો જાનો, રાષ્ટ્રીય સમૂહગાન સ્પર્ધા અને ગુરુવંદન છાત્ર અભિનંદન જેવા સંસ્કારલક્ષી કાર્યક્રમો પણ કરી રહી છે. કેશોદના આંગણે ગત વર્ષમાં 25 થી 30 જેટલા સેવા અને સંસ્કારલક્ષી કાર્યક્રમોનું આયોજન થયું છે. આ વર્ષે પણ નવી ટીમ ખૂબ જોમ અને જુસ્સા સાથે દેશને ઉપયોગી એવા અનેક કાર્યક્રમો આયોજન થનાર છે. ત્યારે નેશનલ વતી અને પ્રાંત વતી એમને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. અસ્તુ. માતૃભૂમિ ન્યૂઝ સાથે વધુ રાવલિયા, જૂનાગઢ. ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં માતૃભૂમિ ન્યૂઝ OTT પ્લેટફોર્મ અને મેગા સિટીમાં કેબલ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ જશે. તો જોતા રહો માતૃભૂમિ ન્યૂઝ.